the last lecture of this semester, right? I believe it was 8th or 9th of April. Important syllabus ही है. Point ये है कि जो पेपर बनाएगा नहीं बनाया ये एक ऐसा सच है जो मैं आपको पूरे सेमेस्टर में आज आखिरी क्लास में बता रहा हूँ कि मैंने पेपर नहीं बनाया है. Okay, now important is in my previous class I did some problems on cash flow operating expenses और मैंने एक रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन कराया था जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आया है, राइट? तो कुछ इश्यूज थे उसके अंदर, ट्राई टू सॉल्व दैट. आपकी क्लास में इन केस यू हैव एनी इशू, देखिए इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, पहली चीज ये कि एज एन एमबीए स्टूडेंट यू कांट बी चूजिंग व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम, राइट? मैं आपको ये बता सकता हूँ पेपर बनाने के लिए मुझे बोला नहीं गया था, लेकिन मैं बनाया मैंने नहीं किया. मेरे पास समय का बहुत कमी है और मेरे को पेपर बनाने के लिए यहाँ पे साइन करना पड़ता है, समय मेरे पास नहीं था, तो मैंने मना कर दिया, राइट? ना पेपर जो भी पेपर बनाएगा सेक्टर बनाएगा, इंपॉर्टेंट ये है आपको ये पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है. वर्क एज अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, स्टडी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ. कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग होता है, थ्योरी इतना अच्छा नहीं कर पाते, कुछ का थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है, वो प्रैक्टिकल उतना नहीं कर पाते, कुछ मिक्स होता है. सो अंडरस्टैंड देयर आर 10 टॉपिक्स. मैं आपसे ये नहीं कह रहा था 10 के 10 करिए या 10 के 10 मास्टरी होना चाहिए, पर जो टॉपिक पे आपको लगता है कि ये आपको समझ में आता है और आप इस पे बेटर कर सकते हैं, वो टॉपिक के अंदर आपका मास्टरी होना चाहिए. इन द सेंस इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन एन एग्जाम you should not commit a single error. That's important. पेपर टफ नहीं बनेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उसका एक सिंपल है रीजन है कि पेपर टफ इसलिए नहीं बनता बिकॉज़ एमबीए के सारे प्रोग्राम से कोई आर्ट्स का स्टूडेंट भी है, साइंस का भी है, कॉमर्स का भी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके भी आया है, तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट कमिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म, right? So paper will not be that tough. The paper will be there, they will test your understanding of the subject. आपका concept clarity कितना clear है वो देखेंगे. जैसे हमने पहले भी प्रॉब्लम कराया रेशियो पे इन्वेंटरी वैल्यूएशन के, मैंने लास्ट क्लास में प्रॉब्लम किया था. बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितना स्ट्रांग है वो टेस्ट किया जाएगा. बाकी मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, I will share it with someone in the class who can share it further, the whole batch. और मैं आपको एक नजर लॉट चाहिए, इसमें पहले लॉट पे मैंने चैप्टर 1 से लेकर के ट्रायल एनालिसिस का स्टडी नोट्स बनाए हैं. इट इज ऑल थ्योरेटिकल, राइट? अगर आप इसे 2 बार पढ़ोगे अगर आपका राइटिंग स्किल बेटर है तो आप उसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो एंड यू कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस. इसके बाद लॉट 2 आएगा. Lot 2 will be from financial statement से लेकर के and depreciation तक आएगा, inventory valuation तक आएगा. That will be lot 2, right? Which I will be able to share within a couple of days. Maybe by Tuesday तक मैं आपको share कर दूँगा. उसके बाद जो अगला lot आएगा that will be from cash flow statement and ratio analysis. Primarily अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो उसमें ratio analysis अपने आप में सेल्फ पीपीटी मैंने शेयर कर रखा है, बट द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो इंपॉर्टेंट. रेशियो एनालिसिस के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना कमी है, वो आएगा नहीं, वेरी ऑनेस्ट. अगर आएगा तो प्रैक्टिकल जहां पे आपको रेशियो दिया गया होगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू मेक द बैलेंस शीट. अंडरस्टूड? And in a cash flow statement, either it could be a full-fledged cash flow statement problem, or it could be that the question may ask you to calculate cash flow from operating activity, cash flow from financing activity, or cash flow from investing activity.
Individually, they may ask you. It is not necessary that you will have a full-fledged 14 marks cash flow statement problem. Are you getting my point? So that could be the possibility. देखिए accounting equation definitely question आता ही है क्योंकि journal और ledger नहीं पूछेगा वो आपसे because you are not going to work as an accountant in one of the company. But yes, accounting equation will tell you कि आपके accounting का knowledge कितना strong है, आपका ये concept कितना clear है कि क्या assets है, क्या liabilities है, क्या revenue है, क्या expense है और कितना और दोनों साइड में कहां का इम्पैक्ट आएगा एक पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन के राइट सो नाउ इन दिस क्लास व्हाट इफ यू हैव एनी इश्यूज एनी प्रॉब्लम राइट दैट we can talk about like in the previous class I have done some problems on cash flow and एक रेशियो एनालिसिस का प्रॉब्लम किया था आपकी क्लास में रेशियो एनालिसिस हुआ किया था रेशियो एनालिसिस का क्या भी हमने बैलेंस शीट बनाई थी if you have question in your book I can try that अगर आपके पास I am not carrying any you want segregation देखिए 14 मार्क्स में ये मान के चलिए 10 मार्क्स would be practical and 4 marks would be theory और 7 marks practical 7 marks theory डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो क्या सोच करके क्वेश्चन सेट करता है राइट बट एक चीज मान के चलिए you will definitely have one case study whether it is on ratio analysis or whether it is on this cash flow statement in the form of क्या आपको cash flow statement बनाने को आ सकता है पूरा का पूरा रेशियो एनालिसिस का केस स्टडी आ सकता है वो डेफिनेटली यू विल हैव लास्ट टाइम आपने एग्जैक्टली उससे क्लियर तो पढ़ा नहीं सर इसमें कैश फ्लो डबल सर का डिवेंचर थोड़ा सा देखिए डिवेंचर का मतलब एज ए कंपनी अगर आप डिवेंचर में इन्वेस्ट करोगे तो डिवेंचर एक तरीके से क्या है अगर आपने डिवेंचर इशू करे तो आपके लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नंबर 1 so issue of debentures will come in financing activity issue of equity shares will come under financing activity issue of preference shares will come under financing activity that is number 1 जब भी कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो अगर आप उस पे अगर डिविडेंड पे करते हो तो वो क्या है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर इंटरेस्ट डिबेंचर्स में पे करोगे तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी अरे बिकॉज मेजरली वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसीलिए इसमें मैं चाहे इंटरेस्ट पे करूं चाहे मैं इक्विटी डिविडेंड पे करूं चाहे मैं प्रेफरेंस डिविडेंड पे करूं वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो लेकिन पैसा आया है तो ऐड करेंगे और पैसा गया है तो माइनस करेंगे फाइनेंसिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इज इट ओके राइट यस और सवाल है तो की दैट अभी यही तो प्रॉब्लम कर रहा था मैं प्रीवियस क्लास में कौन बैठा है यहाँ पे हाँ ये है ना I did this problem in the last week. नहीं इसका वीडियो नहीं है अगर नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग होती है ना वो एब्सोल्युटली अगर इंटरेस्ट पे करोगे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ नहीं है हां बिल्कुल नॉन ऑपरेटिंग बिल्कुल है इट इज अ लोन व्हिच यू आर टेकिंग फ्रॉम द इट इज अ लोन है इट्स अ लॉन्ग टर्म डेट इट कम्स अंडर लॉन्ग टर्म डेट राइट
बोले तो ट्रांसफर प्राइसिंग का उपयोग पूछिए। अगर वो आई बिलीव 40% तो चाहिए होता है अलग अलग। कोई बात नहीं, तो खराब का मतलब ये है कि आई बिलीव आउट ऑफ कितने मार्क्स का था? 30 मार्क्स का ना, तो आपको 40% मतलब 12 नंबर तो चाहिए चाहिए। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें। तो 12 मार्क्स या 12 क्वेश्चन नीड टू बी राइट आउट ऑफ 30। जो आपका सेशनल हुआ है, इंटरनल हुआ था। हाँ, ये ऑफलाइन के अंदर आपको अंदर 40% तो चाहिए होता है। 75 का है तो 30 नंबर तो चाहिए ही चाहिए आपके, और अगर 100 का है तो 40 नंबर चाहिए। अगर 3 क्वेश्चन करेक्ट कर लोगे तो बाय डिफॉल्ट ये ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए एक आप रेंटल हाउस में रह रहे हो और आपने रेंट पे किया, तो ये आपके लिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर हो और आपने एक बिल्डिंग बनाई और उसको रेंट पे दे दिया, तो आपके लिए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आपको क्या मिल रहा है? रेंटल इनकम आ रही है। तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड दैट विल बी एज अ कैश इनकम। कैश रिसीव्ड बाय, तो रियल एस्टेट कंपनी का बिजनेस क्या है? आप सोचिए, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट के लिए प्रॉपर्टी का लेन देन है, तो वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया।
नेट चल सकता है क्या? फिर नेट चल सकता है नेट?
ये चलेगा क्या? इसको अटैच कर दीजिए इसके साथ, ताकि ये वाला केबल। उधर से देखो आवाज में, एक सेकंड। हाँ। होने वाला। Okay, this is the question paper which I gave when I'm teaching and working. So this is मेरा end university pre-university examination का question paper है, which I have said, right? So this is a paper where you have to make an accounting equation, right? And you have to prepare the balance sheet. मैं आपको इसके लिए 15 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ and you have to make it in 15 minutes. ये मान लेते हैं कि आपका end semester का question paper है, right? You have to make an accounting equation of this problem. 15 minutes to solve this problem, please. Do it fast. You have to make an accounting equation. You have to make an accounting equation. You have to make an accounting equation. Make it fast, please. Done? Acha, okay. You have to make an accounting equation. You have to make a balance sheet from this.
अभी तक तो ठीक ही है मेरे ख्याल से, तो ऐसा वरना तो प्रॉब्लम होता है, तो ठीक आ रहा है। ठीक है, इट्स ओके। You can click a photograph please of the same and you can do it, right? आ गया। तो मत करो, रहने दीजिए। देखिए, कोई बात नहीं, इसको पकड़ के बैठ। नहीं पकड़ना नहीं सर एक उसी में प्रॉब्लम है मुझे लगता है। ये पहले भी प्रॉब्लम था ना, लेकिन वो ऑडियो ये सेम ही तो है, ये ऑडियो वाले। नहीं ये यहाँ से तार हिल रही है बस। देखते हैं। तो ये लगाना। देखते हैं।
Done? This problem should not take more than 10 to 15 minutes. Not more than 10 to 15 minutes. Hmm? अच्छा साइड चेंज करूँ. Okay, so let us start. You have to make an accounting equation of the given transactions, and then you have to prepare the balance sheet. And I believe all of you have this question. So let us, this is a solution. Let us understand it. Now this is a solution for each of the transactions, and that is how you have to make it. Now if you see the first transaction, what it says is that a company, they have invested money in a company, right? But apart from that, when they have invested in the form of 20,000 is the cash, 50,000 is the stock, and then 30,000 is the furniture. Is it okay? So what was the transaction? The transaction was
that commenced business with cash rupees 20,000, goods 50,000 and furniture 30,000, right? So 20,000 will go to the cash column, 50,000 will go to the stock column and 30,000 will go to furniture and 1 lakh will go under owner's equity. Is it okay? The second transaction, what it says is, company has purchased goods from Gopal on credit, right? So goods have come and Gopal is the creditor, right? So the transaction will affect both sides. The stock will increase by 40,000 and here Gopal will also increase by 40,000. Clear? Understood? Next, the third transaction, it says that goods were sold for rupees 60,000 which were costing rupees 30,000. Clear? So there is a 10,000 of rupees, 10,000 rupees profit is there. Yes. So the profit, whenever company earns profit, capital increases, and whenever there is a loss, capital decreases, right? So if you see here, 40,000 rupees के goods बेचे हैं, so cash has come in 40,000 rupees, stock चला गया 30,000 rupees, and 10,000 is the profit here. Is it okay? Understood? Next transaction, fourth one, sold goods to Ram on credit rupees 65,000 which were costing rupees 50,000. Goods बेचे हैं. So goods बेचे हैं तो what will happen? The impact will be 50,000 का stock कम हो गया. Ram एक debtor है, create हो गया because it is on credit, and 15,000 is the profit which will be added to capital account. Clear? Understood? Right? अगर किसी को कोई डाउट हो इस ट्रांजेक्शन में तो पूछ लेना प्लीज. ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन यह है कि आपने गुड्स बेचे राम को ऑन क्रेडिट, तो एक तो स्टॉक कम हो गया, राइट? राम कौन है? कस्टमर. डेटर्स क्रिएट हो गए 65,000 से, राइट? और 15,000 का क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट, क्योंकि गुड्स का कॉस्ट 50,000 था, यू हैव सोल्ड इट फॉर 65,000, सो यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 ऑन इट. सो जब भी प्रॉफिट होगा कैपिटल में ऐड होगा, जब भी लॉस होगा कैपिटल में माइनस होगा. कोई एक्सपेंस करोगे तो कैपिटल में कम होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, विड्रू फॉर पर्सनल यूज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000. अब आपने गुड्स विड्रॉ करे हैं, राइट? सो द इंपैक्ट विल बी इन द ट्रांजैक्शन इज 5,000 से स्टॉक कम हो गया और 5,000 से ड्रॉइंग्स कम हो गए, मतलब कैपिटल कम हो गए इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स. इज इट ओके? क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट इन द एग्जाम. अगर आप देखिए, आपको बोला गया है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन शो करना है तो आपको बनाना पड़ेगा. यू हैव टू मेक एन अकाउंटिंग, यू कैन नॉट स्ट्रेट अवे मेक बैलेंस शीट, राइट? नेक्स्ट, परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर. अगेन ये ड्रॉइंग्स है एक तरीके से, राइट? सो आपका क्या हुआ? 20,000 से आपका कैश कम हो गया और 20,000 से उधर कैपिटल कम हो गई. क्लियर है? इज इट ओके? राइट. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज चेयर्स फॉर कैश. चेयर्स है, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा. Is it okay? So furniture has gone down, it has increased by 10,000 and cash has gone down by 10,000. Transaction G. Next, paid for printing 500 and company has received a commission of 1,200. तो प्रिंटिंग इज एन एक्सपेंस, तो 500 रुपए से कैश कम हुआ, 500 से कैपिटल में कम होगा, 1,200 रुपए का कमीशन आया, कैश में 1,200 रुपए ऐड हो जाएगा और उधर कैपिटल में भी 1,200 रुपया ऐड हो जाएगा. इज इट ओके? सो यू सी here 500 has been deducted from here, 500 has been deducted from capital, 1,200 is added in cash and 1,200 is added in capital. Is it okay? Right. Next transaction, introduce fresh capital. कैश बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया.
cash has gone up and capital has also gone up. Is it okay? And the last transaction, paid to Gopal. आपने गोपाल कोई क्रेडिटर था जिससे पहले माल परचेज किया था. You are paid. Cash has gone down and the balance of Gopal has also gone down. It has declined. It has reduced. Right? Now you see the impact. This is the. अब आपका अगर इसका net impact निकालो, cash after every transaction it is 40,700. Stock is 5,000. Furniture is 40,000. Ram is a debtor. It 65,000, which is equal to Gopal ka 10,000 and your share capital is of 1,40,700. लेकिन अब इसको दिखाना कैसे बैलेंस शीट में? शेयर कैपिटल अलग से दिखाएंगे प्लस प्रॉफिट अलग दिखाएंगे. आर यू गेटिंग इट? 1,00,000 का पहले कैपिटल था, 40,000 रुपए का और फ्रेश कैपिटल आया, टोटल 1,40,000 शेयर कैपिटल हो गया. प्लस अब ये जो है इनमें आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा टू फाइंड आउट. देखिए 1,00,000 का ये फ्रेश कैपिटल, 40,000 ये कैपिटल, कितना हुआ टोटल कैपिटल? 140 माइनस 25,000 ड्रॉइंग्स. इज इट ओके? द इनकम इज व्हाट? 10 plus 15 is 25, 25, 26,200 is my profit income minus expenses 500. So you have to show it in that manner. Is it okay? Total capital 140,700 लिख दोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. शेयर कैपिटल लिखिए, उसमें से ड्रॉइंग्स माइनस करिए और एड प्रॉफिट करिए, तब ये टोटल 1,40,700 आना चाहिए. Is it okay? Is it clear? That balance sheet? Yeah, you can make it. ये 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा. 4 नंबर का थ्योरी भी आ सकता है इसके साथ. बैलेंस शीट नहीं, मैंने बनाया नहीं है, जस्ट मेड इट. एज पर द कंपनी एक्ट 2013. लेकिन इस प्रॉब्लम इसमें बनाने का जरूरत नहीं है, और बनाना भी चाहते हो तो स्टेट बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हैं? पहले वाला भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? सो ये प्रॉब्लम अकाउंटिंग इक्वेशन का ऐसे ही आने वाला है. Now, do this problem. This is a depreciation problem. 15 minutes to solve the depreciation problem. तो हमें अकाउंटिंग एंट्रीज भी पास करना है? नहीं, केवल इक्वेशन दिखाना है. नो जर्नल एंट्रीज. इक्वेशन जो वो फॉर्मेट है, बिल्कुल 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 सिर्फ वो फॉर्मेट बनाओ, उससे बैलेंस शीट बना दो. बिल्कुल. इसमें तो नॉर्मल बना दीजिए. Now, this is again a question which may come. Convergence of Indian accounting standard with IFRS, and you have to distinguish between IFRS and Indian accounting standard. You have to make a machinery account up to 31st of March 2019.
And remember, working notes is important. Working notes should form part of your answer. जब भी आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, साइमल्टेनियसली आपके वर्किंग नोट्स भी बनाने पड़ेंगे. अकाउंटिंग में हाँ बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा. 15 minutes for the question. On 1st April 2015, Montech Machines Limited purchased 10 machines of rupees 30,000 each. So the total value of the machine is 3 lakh. Yes. On 30th June 2016, one machine out of those 10 machines which was purchased on 1st April 2015, it was sold for rupees 24,000. And on 31st December 2017, one more machine was sold for 22,500. A new machine was purchased on 30th September 2018 for rupees 32,000. Company has adopted the practice of providing depreciation at the rate of rupees 10% per annum on original cost of machine. Which method? SLM, straight line method. Yes. And you have to, the company's books are closing on 31st of March every year. So you have to make a machinery account. You have to make a machinery account. Remember, working notes should be part of your answer.
On 30th June 2016, one machine out of 10 machine which was purchased on 1st April 2015, it was sold for 24,000. उनमें से एक मशीन 24,000 की बेची है 30 जून 2016 को. Anyone who has completed it? Have you made it till 31st March 2019? All right. I hope all of you have this question with you. So let's see the solution. Closing आ रहा है 1,74,400. Now this is machinery account. Let's see year by year. 2015 is clear. 1st April, the company has purchased 10 machines worth rupees 30,000 rupees each. So the total machine value is 3 lakh. On 31st of March, company is charging depreciation at the rate of 10% and using straight line method. So 10% of 3 lakh is how much? 30,000 is the amount of depreciation. So the balance of the 10 machine as on 31st March 2015 is 2,70,000. Any problem in the first year? No. So this balance will carry forward to the next year. So 2 balance BD 2,70,000. It was on 1st April 2016. Right? Now, out of this, on 30th June, company has sold one machine.
of out of those 10 machines for rupees 24,000. So कंपनी ने 24,000 का मशीन बेचा है. So buy cash 24,000. Is it okay? Now if you remember the value of the machine, let's see, the cost of the machine was how much? 30,000. In the first year, company has charged depreciation how much? 3,000. So the value of the machine was, so this is the book value at the end of year 1, right? Now, this machine was sold on 30th June. So we have to charge depreciation for 3 months on this. So 27,000, 30,000, because we are using straight line method, right, at the rate of 10% for how many months? 3 months, right? So 1 by 4, and how much it comes to? 750. So 750 is the depreciation the company has to charge on this first machine, right? So minus, this is the second year depreciation, minus depreciation 750. So the book value of the machine is 26,250. Clear? And the company has sold this machine for rupees 24,000. So company made a loss on sale of machine of 2,250 rupees. Is it okay? So loss on sale of machine is 2250. Clear? Right? So now we are left with how many machines? 9 machines. So the 9 into 30,000, the total value of the machine is 2,70,000, and we are using a straight line method. So 10% of 27, 2,70,000 is how much? 27,000. So 27,000 is the depreciation. Is it okay? Clear? All right. So this is 2017 is over. Now this machine value of 2016 is transferred to 2017. On 1st April, the value of 9 machine is 2,16,000. Right. On 31st December, company has sold another machine out of those remaining 9 machines. उनमें से एक मशीन और बेच दी कंपनी ने. Clear? Understood? Right? So the cost of machine was 30,000. First year depreciation is 3,000, right? 27,000. Second year depreciation is 3,000. The value of the machine at the end of second year is 24,000. Now this machine was sold on 31st December, right? So 10% of 30,000, right? At the end, how many months? 9 months, right? How much is the depreciation? So third year depreciation is 2250. 0571. 21,750 is the book value. It was sold for how much? 22,500. So the company made a profit of 750. 750 rupees, right? So two profit on sale of machine 750, right? Buy cash 22,500, and this is the value of how many machines? 8 machines. 8 into 30,000 is 2,40,000, and 10% of it is 24,000 rupees. Is it okay? Is it clear? Now, this, the value of the machine at the end of 2018 was 1,68,000. So this balance will be transferred to 2018, 2018 April, or it was 1,68,000, right? So there is another machine which was purchased in 2018-19. When it was purchased? On September. Yes, सितंबर में हमने परचेज करा इसको. So to cash account 32,000.
So now how many machines are there? 8 पहले, एक और, so 9 machines हो गया. So now we have to calculate depreciation. First we have to calculate depreciation on those 8 machines. How much it will be? 24,000 or 80. This 32,000 it was purchased on, right? So 10% of 32,000 into 6 by 12. When it was purchased? 30th September. So October, November, December, January, February, March. 6 months. 6 months. It was purchased on 30th September, not on 1st September. Right? So 6 months depreciation will be charged. How much it is? 1600. So the balancing figure is 1,74,400. And that is how you have to make a machinery account. Right? So the value of the machine at the end of 31st March 2019 was 1,74,400. Is it okay? Is it clear? Understood? This is the problem which you have to, here you have to make the trading profit and loss and balance sheet. This is the problem where you have to make trading profit and loss and balance sheet. अभी बड़ा कर देता, ज्यादा बड़ा करूंगा तो शायद दिखेगा नहीं आप लोगों को. आप आधा आधा ले लीजिए, पहले इसका ले लीजिए. Half portion is this, right? You can take the half of this and then another half of this. I'll show it to you. ये कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाना है. अगर क्वेश्चन कहता है तो, नहीं है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो फिर तो, बिकॉज वो ओपन एंडेड है ना, आप कैसे भी बनाना चाहो बनाओ. हाँ, अगर कंपनी है तो कंपनी के नाम से फिर भी डन. एंड अनदर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज दिस. इसमें तो हमने एडजस्टमेंट दिए हैं, लेकिन आपके में एडजस्टमेंट आए नहीं है, आपको कराए भी नहीं गए होंगे, आई बिलीव सो. आपको एडजस्टमेंट नहीं कराए ना? मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है जिसमें एडजस्टमेंट दिए गए हैं. I have not seen any problem having adjustments. अगर आपको आता है तो कर सकते हो आप. मेरे को पता नहीं है क्या आएगा ना एग्जाम में, आई डोंट नो. देखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए बेटे. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चेंज जब भी होगा तो आपको पता लग जाएगा कि इस मेथड, अब से मेरे को, आपको मान लो मैं यहाँ पे बोल देता चेंज इन मेथड है सेकंड ईयर से, तो जो बुक वैल्यू होती वो फिर उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते आप.
right? So make the trading and profit and loss and balance sheet. आप पुराने मेथड से बनाइए, make it fast but मैंने आपको पहला हाफ तो दिखा दिया था. This is the first half of the problem and that is the second half. You have to make the trading and profit and loss and balance sheet. आप साथ में बनाइए, आप अलग अलग बनाइए. बनते तो पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर P&L बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है. आप चाहो तो तीनों साथ भी बना सकते हो P&L में. अगर आप चाहो तो इसे कर सकते हो. आई कैन ट्राई एंड सॉल्व रेशियो एनालिसिस प्रॉब्लम विच इज देयर, राइट? वो तो मैंने करा दिया ऑलरेडी पहले प्रीवियस. हाँ हाँ, ओके. ये एक प्रॉब्लम है जो आप ही के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया है. दिस प्रॉब्लम विच इज अ फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ रेशियो एनालिसिस. आप अपने क्वेश्चन पेपर जो आपके पास है उसमें से आप ये निकाल, यू कैन ऑलवेज गो एंड फाइंड इट आउट, जिसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट सेल्स 40% दिया हुआ है. दिस इज वन ऑफ द रेशियोज. ईयर नहीं है, ईयर इज नॉट मेंशन. 22 22 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये. आपके पास जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पुराने, उसको आप रेफर करिए. 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये. Have you, all of you have this question? Ratio analysis 2022 ka, you can have a look at it. You can find it out. This is a question paper. First one. वो तो मैंने एडजस्टमेंट के साथ कर रखा है, आपको बगैर एडजस्टमेंट के करना होगा. मैं दिखा देता हूँ. You can have it. This is a paper which I believe this is a paper which you must be having somewhere. You can share it on the group, please. Anyone having this paper, please share it on the group, please. Now, this is a ratio analysis problem, and the key to solve this problem is you have to keep two things in mind. One, you have to make a balance sheet. This balance sheet will always be made in the last one. So do not focus and do not concentrate on balance sheet initially. The second important thing is
that when you are starting this ratio analysis problem, the most important thing is your working notes, right? You start with working notes and start with that ratio against which a ratio is given and some value is given. Understood? Against which a ratio is given and some value is given. Okay, so let us start this problem. Now, if you see this problem, there are many ratios which are given to you, right? So we have to look for a ratio where a value is given and a ratio is given. So which ratio we have to use here? आपको बहुत सारे रेशियोज दिए गए हैं और यहां पे आपको लास्ट एक उसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है ड्यूरिंग 2007 एंड 8 कंपनी हैज अर्नड रुपीज 1,20,000. अब जो कंपनी के अर्न किए हैं 1,20,000, व्हाट इज दिस? दिस इज नेट प्रॉफिट, राइट? सो लेट अस स्टार्ट इट. सो वर्किंग नोट्स, working notes. The first information which is given to you in this problem is net profit, which is equal to rupees 1,20,000. This is given to you in this problem, right? Now you have to look for a ratio जहां पे हम ये वैल्यू का यूज कर सकते हैं. ऐसा कौन सा रेशियो है जो यूज करेंगे हम? नेट प्रॉफिट रेशियो. ग्रेट. सो द सेकंड रेशियो in this second thing which we are going to do is we will use net profit ratio. What is the formula for net profit ratio? Net profit upon net sales into 100, right? That implies your net profit is given to us, right, which is equal to, and how much that this ratio is? 10%. Is it okay? That implies 1,20,000 divided by net sales is equal to 0.10, right? So that implies your net sales is equal to rupees 12 lakh. Is it okay? Now, इस क्वेश्चन में अब ये क्या, ये क्वेश्चन ये डिफाइन करता है कि ये पूरी जो सेल्स आपने कैलकुलेट करी है ये पूरी की पूरी कैश सेल है या पूरी क्रेडिट सेल है या कितना पार्टली कैश या पार्टली क्रेडिट है. इज देयर एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू यू इन दिस प्रॉब्लम? यू हैव टू लुक फॉर, is there any information which is given to you whether this sales is 100% on credit or it is on cash or it is partly on cash and partly on credit? It is on credit. अगर आप देखें तो क्या लिखा है इसमें? ये लिखा गया है कि all purchases and sales were on account. When this language is used, it means that this is on credit. So the third information which we can derive from here is that the total credit sales is equal to rupees 12 lakh, right? Now you have to look for a ratio जहां पे हम क्रेडिट सेल का वैल्यू यूज कर सकते हैं. ऐसा कौन सा रेशियो है प्रॉब्लम में जो कि आप जहां पे आप क्रेडिट सेल का वैल्यू यूज करेंगे? विच रेशियो? डेटर्स टर्नओवर रेशियो, राइट? सो फोर्थ वन इज बुक डेट टर्नओवर रेशियो. बुक डेट्स turnover ratio, how much it is? 1.5, sorry, 8 times. This is 8 times, and the formula to calculate this is net credit sales divided by average debtors is equal to 8 times. Clear? That implies 12 lakh divided by average debtors is equal to 8 times. Therefore average debtors is equal to 12 lakh divided by 8, which is equal to rupees 1,50,000. So you have calculated average debtors rupees 1,50,000. आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा. If you want to come this side, you can sit, right? Is it okay? So your average debtors are how much? 1,50,000. Is it okay? Understood? Okay. अभी और कौन सा रेशियो है जहां से हम
जो भी इंफॉर्मेशन हमने यूज करी है हम कुछ और कैलकुलेट कर सकते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, राइट? सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज गिवन टू यू. ग्रॉस profit ratio is how much? 40%. This is given. And the formula to calculate is gross profit upon net sales into 100, right? Which is equal to 40%. So that implies gross profit upon 12 lakh is equal to 40%. That implies your gross profit is equal to rupees 4 lakh 80,000. So we have calculated gross profit is 4 lakh 80,000. Is it okay? अभी जितना इंफॉर्मेशन निकाला इसमें हम क्या इंफॉर्मेशन और डिराइव कर सकते हैं? व्हाट इन जो भी इंफॉर्मेशन अब तक हमने कैलकुलेट किया है इसमें और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ग्रेट. सो अभी हमको सेल्स पता लग गया, हमको ग्रॉस प्रॉफिट पता लग गया. सो द नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. The formula for cost of goods sold is total sales minus gross profit, right? Which is equal to rupees 12 lakh minus rupees 4 lakh 80,000, which is equal to rupees 7 lakh 20,000. So your gross profit is 7 lakh 20,000. Is it okay? Right? Now, अब जो भी इंफॉर्मेशन निकाला फिर देखो कौन सा ऐसा रेशियो है जो हम यूज कर सकते हैं इन वैल्यूज को देख कंसीडर करके. एसेट टर्नओवर रेशियो. फाइन. सो नंबर 7 इज एसेट टर्नओवर रेशियो and the formula and how much it is? Two times. This is given to us in the problem. And the formula to calculate is net sales divided by total assets is equal to 2 times. नेट सेल कितना है? 12 lakh. So 12 lakh divided by total assets is equal to 2 times. Therefore, total assets is equal to how much? 6 lakhs. So total asset is 6 lakhs. Is it okay? Understood? अगर मेरे टोटल एसेट्स 6 लाख है तो मेरी लाइबिलिटीज भी कितनी होंगी? 6 lakh. Right? So eighth information we have got is that total liabilities is also equal to rupees 6 lakh. Why? Because your total asset is also 6 lakh. Because total asset is equal to total liabilities. Is it okay? Understood? अभी इतना इंफॉर्मेशन निकाला. अब ये देखो कि यहां से कौन सा ऐसा वैल्यू है जो हम यूज कर सकते हैं और कोई ऐसा रेशियो है जो आपको दिया गया है. ओके फाइन. सो एक और रेशियो है विच इज गिवन टू अस. सेलिंग एक्सपेंस टू नेट सेल्स is given to us. How much it is? 20%, right? So that implies selling expenses is equal to 20% of total sales, which is equal to 20 upon 100 of 12 lakh, which is equal to rupees 2 lakh 40,000. So your selling expenses are 2 lakh 40,000. Your selling expenses are 2 lakh 40,000. Now that is the key to solve. आप वैल्यू निकालते रहिए और ये देखते रहिए कि कौन सा रेशियो हम यूज करेंगे नेक्स्ट. राइट? और जो जो रेशियो करते जाएं उसके ऊपर टिक लगाते जाइए कौन कौन से रेशियो हमने कंसीडर कर लिए. सो वी आर डन विद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वी आर डन विद नेट प्रॉफिट रेशियो, वी आर डन विद सेलिंग एक्सपेंस रेशियो, वी आर वी डन विद बुक डेट टर्नओवर रेशियो? Book debt turnover ratio? Yes, we are done with book debt. Are we done with inventory turnover? No. So the next ratio, can we use inventory turnover ratio? Next one? Okay, fine. Should I rub this? ठीक है.
Next. Now 10. Inventory turnover ratio. How much it is given to you? 6 times. And the formula to calculate is cost of goods sold divided by average stock is equal to 6 times. Right? That implies average stock is equal to cost of goods sold divided by 6 times. How much is your cost of goods sold? 7,20,000. So rupees 7,20,000 divided by 6. Therefore, it is 1,20,000. So your inventory is 1,20,000. Your inventory is 1,20,000. Is it okay? Clear? अब देखिए और कौन सा, अभी जितना वैल्यू निकाला, अभी और कौन सा रेशियो है जो हम यूज कर सकते हैं? Total assets to intangible assets, right? Number 11. Total assets to intangible assets is equal to 20 times or 20 is to 1, right? Okay. So total assets value is how much? 6 lakh divided by intangible assets, which is equal to 20. That implies intangible assets is equal to 6 lakh divided by 20, which is equal to rupees 30,000. So your intangible assets are 30,000. It means your tangible assets are, we have to find it out, right? Is it okay? Understood? Clear? Next. अब कौन सा इंफॉर्मेशन है जो हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर? क्या हम बुक डेट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स इशू यूज कर सकते हैं? बुक डेट हम निकाल चुके हैं. बुक डेट मतलब टोटल डेटर्स, राइट? सो नेक्स्ट रेशियो इज बुक डेट्स टू क्रेडिटर्स ratio is how much? 1.5. That implies your creditors is equal to book debt divided by 1.5. How much are your debtors? 1,50,000. 1,50,000 divided by 1.5, which is equal to rupees 1 lakh. So your creditors are 1 lakh. आपके creditors भी कितने निकल गए? 1 lakh निकल गए. Is it okay? Any other information which is given to you regarding? Clear? Understood? Right. Now next what we have to calculate is selling expenses हो गया. क्विक रेशियो का ना, राइट? यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? ओके, ये रब कर दो. सेलिंग एक्सपेंस टू नेट सेल्स आपको दे रखा है प्रॉब्लम में. सेलिंग एक्सपेंस टू नेट सेल्स इज इक्वल टू 20%. इट इज ऑलरेडी गिवन टू इन द प्रॉब्लम. Now, if you see, yeah, book debt का मतलब होता है, there is another name for book debt is what we call them debtors. तो debtors आप already calculate कर चुके हो, right? Clear? Okay. Now, in this question, there is an information which is given to you. क्या दिया गया है? Quick assets. Quick assets. Understand this. Quick assets, they comprises of 25% is cash, 15% is marketable securities, and 60% is your book debts. Right?
बुक डेट्स वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. कहने का मतलब है कि 60% ऑफ क्विक एसेट्स वो आपके क्या है, डेटर्स हैं. व्हाट इट मींस, व्हाट इज सेइंग, हमारे जो क्विक एसेट है ये उसका सेग्रीगेशन है. अगर मान लो मेरे 100 रुपए के क्विक एसेट्स है तो उसमें 25 इज कैश, 15 is marketable securities and 60 is debtors. Is it okay? Now the question से यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, 60% of quick asset is equal to debtors. Is it okay? हमें क्विक एसेट्स नहीं पता, व्हाट वी नो, हमें डेटर्स पता है. कितने निकाले आपने डेटर्स, 1,50,000. तो 60% ऑफ क्विक एसेट इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000. So that implies my quick asset is equal to, yeah, 1,50,000 divided by 0.60, which is equal to rupees 2,50,000. Is it okay or not? So your quick assets are 2,50,000. Is it okay? Right. So this is 2,50,000. So from here, can we have the separate individual values of these items? Right. So 25% of this, it is how much? 1 by 4. 62,500. This is 37,500. And this is 1,50,000. Is it okay? Is it clear? Right. Now we have found quick assets. अभी और कौन सा रेशियो यूज करेंगे अब हम यहाँ पे, क्विक रेशियो का फॉर्मूला. राइट. ओके, ग्रेट. रब कर दूं मैं. Now that is the key to solve such type of problem. You start with a ratio, you start with that ratio against which some value is given. आप वैल्यू निकालते रहिए, अगले रेशियो पे मूव करते रहिए and keep doing it. This is the only key to solve such problem. Done? Okay. Now 14. We are given quick ratio. Quick ratio is how much? 2 is to 1, right? And the formula for this is quick assets upon current liability 2 upon 1. Quick assets we know how much? 2,50,000. So 2,50,000 divided by current liability, which is equal to 2 upon 1. Therefore, current liability is equal to 2,50,000 divided by 2, which is equal to rupees 1,25,000. So your current liability is 1,25,000. Is it okay? Right? Now, which ratio we have to use? Current ratio. Right. Current ratio. 15. Current ratio is equal to 3 is to 1. Formula is current assets upon current liability is equal to 3 upon 1. So that implies current liability, current assets is equal to 3 times of current liability, which is equal to 3 into 1,25,000, which is equal to 3,75,000. So your current assets are 3,75,000. Is it okay? Okay. Now we know we have current assets, we have current liabilities. So from here, can we calculate working capital? So working capital is equal to current assets minus current liabilities, which is equal to rupees 3,75,000 minus rupees 1,25,000, which is equal to rupees 2,50,000. That is your working capital. Right? Now you have to find out that ratio where we can use the value of working capital. Shareholder fund to working capital. Is it okay? Which is given to you. Should I rub this?
So shareholders fund divided by working capital is equal to 1.6. That implies shareholders fund is equal to 1.6 times of working capital, which is equal to 1.6 into 2 lakh 50,000. How much it comes to? 4 lakh. So your shareholders fund is 4 lakh. Is it okay? Now, you have to use, yes. So if you see the last ratio which is given in this is total debt to shareholders fund, right? So 18. Total debt to shareholders fund is equal to 0.5. That implies total debt is equal to 0.5 into shareholders fund, which is equal to 0.50 into 4 lakh, which is equal to rupees 2 lakh. So your shareholders fund is how much? 2 lakh rupees. Your shareholders fund is 2 lakh rupees. Is it okay? Right? No, sorry, your total debt is equal to 2 lakh, not shareholder. Shareholder fund is 4 lakh. Your total debt is 2 lakh. Is it okay? Right. Any ratio which is left, accumulated depreciation to the cost of fixed asset. Okay, fine. So what in this we know total asset. What is the value of total assets? 6 lakh. Right. What is the value of current assets? How much is current assets? 3 lakh 75,000. Right? Is it okay? And there is intangible assets also. How much are intangible assets? Intangible assets. Intangible assets are how much? 30,000. So your fixed assets is, can you calculate fixed assets from here? Can you calculate fixed assets from here? So fixed assets is equal to total assets minus current assets minus intangible assets, which is equal to 6 lakh minus 3 lakh 75,000 minus 30,000. So how much is the value? 1 lakh 1,95,000. 1,95,000 is are your fixed assets. Is it okay? Clear? Right? Now from here we will use that formula. Accumulated depreciation to cost of fixed assets. Is it okay? Right? Accumulated depreciation to cost of fixed assets. Should I rub this? नहीं, वो अलग करेंगे. Intangible assets, क्योंकि उसने वैल्यू अलग से मांगी है ना क्वेश्चन के अंदर, उसने कैलकुलेट कराया है अलग से. नो डाउट वो आप कह सकते हो कि फिक्स एसेट्स का पार्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे या तो वो देता नहीं, या तो वो अलग से रेशियो देता नहीं, तब तो ठीक था. लेकिन अगर उसने रेशियो दिया है, इसका मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे करंट एसेट्स इतने थे, इनटेंजिबल एसेट्स इतने थे, इसमें से टोटल एसेट्स में से वैल्यू माइनस करोगे तो जाकर के क्या आएगी, आपके फिक्स एसेट्स आएंगे. हो जाएगा, वरना उस रेशियो उस इंफॉर्मेशन को देने का क्या बेनिफिट है. राइट? इज इट ओके? नाउ 20 accumulated depreciation upon cost of fixed asset is equal to 1 by 3, right? So that implies accumulated depreciation
is equal to cost of fixed asset divided by 3. कितना है? 1,95,000 divided by 3, which is equal to बट यू हैव टू फाइंड आउट कि पूरी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स कितने हैं, वो नहीं गिवन है, तो वो गिवन करने के लिए तो तभी तो हमने डिफरेंशिएट, इस क्वेश्चन ने डिफरेंशिएट किया है कि करंट एसेट्स भी है और इनटेंजिबल, या तो वो रेशियो देता नहीं ना, तब तो हम डिडक्ट नहीं करते, लेकिन उसने स्पेसिफिकली बताया कि इंटेंजिबल एसेट्स आपके कितने हैं, 30,000 है, तो देन यू हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम योर टोटल एसेट्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. यस, सो सारे रेशियोज हो गए. एनी रेशियो विच इज लेफ्ट? ओके, so the capital consisted of equity shares which are issued at a premium of 10% and 12% preference shares of rupees 100 each. This is given to you. Then you are given interest was earned 17 times. Interest was earned 17 times. So here you have to apply which ratio? Interest coverage ratio. Yes. And the formula to calculate interest coverage ratio is earning before interest and tax divided by interest. Is it okay? Understood? कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू करे? 10% डिबेंचर्स इशू करे फॉर रिडम्पशन इन 2009. तो हमारा डेट कितना आया? टोटल डेट कितना आया? हाउ मच इज द टोटल डेट यू हैव कैलकुलेटेड? 2 lakh is the debt, right? 10% is the debentures. 10% डिबेंचर, हम ये मानते हैं कि जो टोटल डेट है वो आपके टोटल डिबेंचर्स हैं जो कंपनी ने इशू करे हैं. इज इट ओके? राइट? अंडरस्टूड? इसमें आपने टोटल डेट 2 लाख निकाले हैं, 10% डिबेंचर्स हैं वो, सो 10% डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपीज है, उस पे ब्याज कितना बना? 20,000. इज इट ओके? सो फ्रॉम देयर वी कैन यूज विच फॉर्मूला? नाउ 21 total debt is equal to rupees 2 lakh. Company has issued 10% debentures. Therefore, 10% debentures value is rupees 2 lakh. Therefore, interest on debentures is equal to 10% of 2 lakh, which is equal to rupees 20,000. Is it okay? Is it clear? Now, yeah. नहीं नहीं, टोटल डेट आपने निकाला उसमें से. ओके फाइन. टोटल डेट हमारा कितना है? टोटल डेट कितना था? 2 लाख है. करंट लाइबिलिटीज कितना है? हाँ सॉरी, सो टोटल डेट इज दिस. करंट लाइबिलिटीज इज 1,25,000. देयरफॉर लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू रुपीज 75,000. ग्रेट. यस. सो लॉन्ग टर्म डेट, सो डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट है. डिबेंचर्स इज अ लॉन्ग टर्म डेट. सो 75,000, 10% ऑफ 75,000 is how much? Rupees 7,500. Is it okay? Clear? Now, next ratio which we are going to use here is interest coverage ratio. What is the formula for interest coverage ratio? EBIT upon interest. Is it okay?
तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना दिया है हमको? 17 टाइम्स. That implies EBIT upon how much is the interest? 7,500 is equal to 17. Therefore, EBIT is equal to how much? 17 into 7,500. How much it comes to? 1 lakh? 1,27,500. That is your earning before interest and taxes. That is your earning before interest and taxes. Is it okay? Right? अब ये EBIT कहां यूज कर सकते हो? सोचिए कौन सा ऐसा रेशियो है जहां पे आप EBIT यूज कर सकते हो? क्वेश्चन कहता है इन्वेंट्री के लेवल में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, डिबेंचर्स में कोई चेंज नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड में कोई चेंज नहीं है. परचेज और सेल्स आर परचेज ऑन अकाउंट. प्रेफरेंस डिविडेंड पेड इन 2007-8 इन फुल वाज ₹3,000. कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है. ओके फाइन. अब हमको यहां से क्या इशू, मेजर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट इज वी नो EBIT, राइट. सो एक फॉर्मेट है जो मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया है. फॉर्मेट क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस interest. What you get is earning before tax minus tax. What you get is earning after tax minus preference dividend. What you get is earnings available to equity shareholder. ये फॉर्मेट मैंने आपको पहले बताया हुआ है. Right? Is it okay? Now we have calculated EBIT. How much? 1,27,000. We have calculated interest also. How much is the interest? 7,500. So we get EBIT is 1,20,000. Tax rate दे रखा है. Tax rate is how much? 25% is tax rate at the rate of 21/4. 30,000. This is 90,000. Preference dividend is how much? Preference dividend paid in this in full was ₹3,000 only. So earnings available to equity shareholders is how much? इसका कहां यूज कर सकते हैं? Earning per share. Great. So this ratio, this value, it will be used in earning per share, EPS. So formula for EPS is EPS. This is 23, right? EPS is equal to earnings available to equity shareholders divided by number of equity shares. Earning per share is given to us in the problem. How much is this? 4.68. This is given to us. 4.68. This is also given to us. This we have already calculated. How much? 87,000. 87,000. Right? Divided by number of equity shares outstanding. Therefore, number of equity shares outstanding is equal to 87,000 divided by 4.68. How much it comes to? 18,000. 18,590 equity shares the company has to issue. Is it okay? Is it clear? और ये जो शेयर्स इशू करे कंपनी ने पे कितने पे इशू करे हैं? प्रीमियम पे इशू करे हैं. कितने प्रीमियम पे? 10% प्रीमियम पे शेयर. तो अब आपको शेयर होल्डर्स फंड तो पता है. हाउ मच इज द शेयर होल्डर्स फंड? शेयर होल्डर्स फंड आपको पता है. हाउ मच इट इज? कितना कैलकुलेट किया है आपने? 4 लाख, राइट. और इसका बाइफर्केशन क्या होगा? इक्विटी शेयर्स एंड
प्रेफरेंस शेयर्स. इज इट ओके? अंडरस्टूड? क्लियर? अगर मैं मानूं कि मेरा एक शेयर का भाव कितना है, 10 रुपए है, तो 10% प्रीमियम का मतलब कितना हो गया? 11 रुपए का एक शेयर हो गया. कितने शेयर्स इशू करे कंपनी ने? 18,590 मल्टीप्लाइड बाय 11. हाउ मच इज द इक्विटी शेयर कैपिटल? 11 into 18,509. 2,04,490. Right? Out of 4 lakh, this is the equity share capital. And how much is the preference share capital? Minus कर दीजिए. 1,95,510. Is it okay? Is it clear? Right? Breakup हो गया पूरा बैलेंस शीट का. You have found, you have calculated every single item. Okay, यहां तक क्लियर हो गया. हमारा शेयर होल्डर्स फंड वी हैव कैलकुलेटेड इज हाउ मच? 4 लाख. शेयर होल्डर्स फंड, ये शेयर होल्डर इक्विटी, ये शेयर होल्डर इक्विटी नहीं है, ये शेयर होल्डर्स फंड है. तो शेयर होल्डर्स फंड इट कंप्राइजेस ऑफ, इन दिस प्रॉब्लम इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इज इट ओके? नाउ क्वेश्चन ये कहता है कि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं 10% प्रीमियम पे. मान ले एक शेयर का भाव कितना होता है? 10 रुपया, और 10% प्रीमियम मतलब 1 रुपया और प्रीमियम पे चार्ज कर रहे हैं. सो एक शेयर का भाव कितना हो गया? 11 रुपया. कितने शेयर्स इशू करे हैं? 18,590. मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट इक्विटी शेयर कैपिटल. 4 लाख में से ये माइनस कर दीजिए, यू गेट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. डन. So now you have all the components of your balance sheet. Place the value in the balance sheet. Your balance sheet should match. Is it okay? Huh? Absolutely, that is the purpose. लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दिस प्रॉब्लम बहुत, ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना स्पीड बन जाएगा. आज थोड़ा सा लाइक अगर ये समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट व्हेन यू आर डूइंग इट इन योर आंसर शीट इट शुड नॉट टेक. और अगर मान लेते हैं ये 20 नंबर का प्रॉब्लम है, तो गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट टू दिस प्रॉब्लम ओनली. यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. आप कर पाओगे इसको. इज इट ओके? थैंक यू सो मच. अटेंडेंस शीट दे दीजिएगा.